Good morning, students. Welcome you in the second part of the video, The Tale of Custard the Dragon, which is written by Ogesh Nas, who was an American English poet. Through this poem, the poet is telling us that nature of a person doesn't mean that that person would not do something in the hard situations. Through this poem, the poet is telling us that outer appearance of someone does not same at the particular or different times. So in the part 1 we have discussed 6 of the stanzas of this poem. Now I am briefing you out all these 6 stanzas and then I will explain other stanzas of the poem. So, in the first stanza, the poet had illustrated Belinda and her 4 pets. Belinda, who lived in a white house, was having 4 pets: a little black kitten, a little grey mouse, a yellow dog, and a pet dragon. These were the 4 pets which Belinda had with her in a little white house. In the second stanza of the poem, the poet told us the names of these 4 pets. Black kitten was named as Ink, grey mouse was named as Blink, and the yellow dog, who was sharp, was named as Mustard, and the pet, who was a coward, was named as Custard. These are the word meanings I told you already. Then in the third stanza, appearance of Custard the dragon has given, who had sharp teeth, spikes on tops, scales underneath, and mouth like a fire chimney. This was the appearance of the dragon in the third stanza. Then in the fourth stanza, the poet has briefed out the other 3 pets of the house. Belinda, who was brave as barrel full of beer. Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was brave as a tiger in rage. Rage means gussa, anger. And Custard cried for a nice safe place. Through these 4 stanzas, we have came to know that Custard was such a coward pet. Though he was a dragon, still the other pets of the house were much cleverer and braver than him. These are the word meanings. Now, next stanza of the poem, let us start. Brenda tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in little red wagon and Relio cowardly dragon. In the fifth stanza, we came to know that Belinda and other pets of the house were tickling the dragon. Then in the sixth stanza, which we have done in our previous video, we did that all the animals and including Belinda were making fun of the dragon. Let's start the seventh stanza of the poem. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Here, window means window. The poet has used this word to rhyme the above word. Window means window. Suddenly they heard a nasty sound. अचानक से उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी. मस्टर ग्राउंड, मस्टर चिल्लाया. दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब इधर उधर देखने लगे. म्याउच क्राइड इंक, जो इंक है वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहा है. बेलिंडा भी चिल्लाई.
क्योंकि वहाँ एक पायरेट था। पायरेट मीन्स डाकू आप कह सकते हैं। वैसे सी पायरेट्स होते हैं जो कि लुटेरे होते हैं। तो देयर वॉज अ पायरेट, लुटेरा था वहाँ पर, क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो विंडो से क्लाइंब कर रहा है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass blade. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. Now the appearance of pirate has given in this stanza. Pistol in his left hand, pistol in his right. जो पायरेट है उसके दोनों हैंड्स में पिस्टल थी। बोथ द हैंड्स वर फुल ऑफ पिस्टल, पिस्टल से ली हुई थी उसने दोनों हाथ में। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और अपने जो दांत है उसमें भी एक स्वॉर्ड की तरह पकड़ा हुआ था कुछ। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। उसकी बियर्ड जो थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, एक लेग उसकी वुड की थी। मीन्स ही वॉज ओनली हैविंग वन लेग। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। लग रहा था वो पायरेट उनके लिए अच्छा नहीं है। नाउ सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर हेयर। नेस्टी मीन्स बैड, ग्राउल्ड थंडरिंग वॉइस, चिल्लाने की आवाज़, window I had already told you, and cutlass, sword. Next stanza of the poem. Belinda paled and she cried, help, help. You can see in the pictures also. But Mustard fell with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. Now in this situation, all the members of the family who showed them that they are braver than anyone else. So, what was their reaction at the time of difficulty? बेलिंडा पेल, बेलिंडा पीली पड़ जाती है, डर जाती है और चिल्ला रही है हेल्प के लिए। मस्टर्ड है वो चिल्ला रहा है अपने डर के कारण। इंक है वो घर के नीचे कोने में जाकर छुप जाता है, और ब्लिंक जो लिटिल माउस है वो अपने हाउस होल्ड में छोटे से कोने में जाकर छुप जाता है। दीज वर द रिएक्शन ऑफ ऑल द ब्रेव एनिमल्स एंड द पर्सन ऑफ द हाउस। सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर हेयर ऑल्सो। पेल मीन्स फियर, फ्लैड रन अवे, टेरिफाइड येल्प, फियर्ड बार्क भौंकना डर से, trickle down, went down, strategically, cleverly. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a gun, with a clatter and clank and a jangling scream. He went up the pirate like a robin at a worm. Now, when all the persons and animals of the family went away due to the fear, Custard jumped up. Custard जो है जिसे वो टिकल करते थे, जिसका मजाक उड़ाते थे, वो अचानक से आया चिल्लाते हुए एक इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ ड्रैगन, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जिंगलिंग स्केम, हर तरह से डराते हुए। ही वेंट अप एट द पायरेट लाइक अ रोबिंग एट अ वोम, पायरेट के ऊपर वो इस तरह से कूद पड़ा जैसे कि एक रोबिंग, जो कि एक बर्ड है, वो किसी वोम पर टूट पड़ता है। क्लैटर एंड अ क्लैंक मीन्स साउंड, थंडरिंग साउंड। ओके, so here are some of the word meanings. Snorting, sound of engine. Clashed, attack. Dug in, cell. Clatter and clank, sound of iron striking. Jangling, scream means thundering. The pirate gaped at Belinda's dragon
and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit, and Custer gobbled him every bite. अब जो पायरेट है उसने ड्रैगन बेलिंडा के ड्रैगन से थोड़ा गैप बना लिया एंड गल्प सम गॉच फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर उसे पी लिया. ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट. उसने अपनी गन से जो उसके हाथों में थी उससे फायर किया लेकिन वो ड्रैगन को हिट नहीं हुई. एंड कस्टर गोबल्ड हिम एवरी बाइट, और कस्टर ने उसको उठाया और गोबल्ड मीन्स निगल जाना, निगल लिया. बेलिंडा एम्बेज्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम. नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम. Ink and blink in glee did great. Around the dragon they ate the pirate. अब जो बेलिंडा है उसने हक किया ड्रैगन को, मस्टर्ड ने लिक किया. नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम. किसी ने भी पायरेट के बारे में बात नहीं की. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट. इंक और ब्लिंक जो है वो कूद पड़ते हैं खुशी से. अराउंड द ड्रैगन दे एट द पायरेट, और ड्रैगन के अराउंड वो पायरेट को वहाँ से भगा देते हैं. सम ऑफ द वर्ड मीनिंग: गैप्ड, सरप्राइज्ड, गल्प्ड, ड्रिंक, ग्रॉज, वाइन, फैगन, कंटेनर, एम्बेर्स्ड, हग्ड, licked, tongue touch, glee, joy, and great dance. They all dance mercifully. But presently up spoke little dog Mustard. I had been twice as brave if I haven't the flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been 3 times as brave. Breathing and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब इस सिचुएशन में जब पायरेट चला जाता है सब क्या कहते हैं, जो मस्टर्ड है और जो इंक ब्लिंक है वो सब क्या कहते हैं कि ये सब तो बहुत छोटी सी बात थी, हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे. और कस्टर्ड इस बात पर एग्री करता है कि हाँ आप सब लोग मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव हो. फ्लशर्ड गॉट नर्वस, नर्वस हो जाता है यहाँ पर. सो दिस वॉज द पोएम वी हैड डन till now. I hope you have enjoyed it. So 2 stanzas are left. We will do it in our next video. Thank you. Have a great day.